Welcome everyone to yet another episode of Campus Chronicles. As you know that on this podcast, we invite leadership across the spectrum to discuss and understand and create stories for the youth to inspire. And today in that connection, we have yet another very exciting personality. We are honored to joined by Muhammad Nassir Salim, the President and CEO of Habib Bank Limited, HBL. Nassir, welcome to Campus Chronicles. Thank you so much. Before we start, we have seen your journey, US, Middle East, Pakistan. You have traveled across the world. If we take a step back, can you somehow tell the audience about your journey on how it all started and how do you end up leading systematically important bank in Pakistan? That's a tough one. All right. It's a tough one, and thank you. Firstly, I'd like to say thank you to IBA Sukkur for this invitation and this opportunity to talk to the students. Typically, my talks, considering that the audience is generally mixed in terms of their understanding of English. Mm-hmm. It's not our mother tongue. So I try and weave, sort of Spanglish. So there'll be English and Urdu. And I hope that aap naraz nahi hoenge. We're not going to be pure British style, if you will. And I think it's just better that way we communicate in a kind of a language. उस ज़बान में हम गुफ्तगू करें जिसमें कि ज़्यादा जो है हमारी आवाज़ और सोच जो है वो ट्रांसलेट हो. Makes all the sense. So अगर आप जर्नी की बात करें, when I reflect back, it's a very interesting thing. I was originally a pre-medical student. Mm-hmm. Because my father, wanted me to be a doctor. I wanted to be an engineer, so I really spent more of my time, on mechanical things and other things. And Bahral, by the time it got to going to med school, I think I was old enough to say, this is not for me, mm-hmm. right? And but it was too late to be an engineer and go back the way the curriculums were set up. So the next best thing mm-hmm. would be to go and get an MBA. And that is where the special affiliation with the word IBA comes in, because I was fortunate to get into IBA Karachi. Mm-hmm. And even then, I had no idea what was going to come out. When we graduated, and at IBA, not that I was gunning for it, but I did graduate with a gold medal in finance. It just happened. Mm-hmm. I'm not sure that I did anything different than any of the other cohorts that I had. So uske baad, it was about finding employment, mm-hmm. And looking around. And at that time, the banking sector, especially foreign banks in Pakistan, were an attractive place for hiring together with FMCGs. Mm-hmm. I got an opportunity at American Express. And I think when I look at that journey starting in 1988 and up till now, I've never really aspired for anything. Mm-hmm. The only thing that, you focus on is creating an impact. I think अगर हम लोग इस चीज़ पे focus कर लें कि मैं जो है, what do I bring to the table? Mm-hmm. What kind of an impact am I creating? जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग को हमारे अपने ऊपर काबू करना है. So it's a leadership of one. Mm-hmm. The first thing we need to do is we need to be able to manage ourselves well. अगर एक शख्स chronically क्लास में या काम पे लेट आता है, mm-hmm. और वो कहता है कि जी वो ट्रैफिक ज़्यादा थी, so I can sympathize, but दिमाग में मेरे ये आते हैं कि ट्रैफिक आपको पता है on an average ज़्यादा रहती है, तो आप 15 मिनट पहले निकल आए, you will be on time. Mm-hmm. So I think it's about how we show leadership of one. दूसरी चीज़ है कि कोई भी
इस दुनिया में यूनिक लीडर नहीं है, वो किसी ना किसी को जवाब दे। यू आर अकाउंटेबल टू समबडी, दैट्स द वे इट वर्क्स। सो एज ए लीडर यू ऑल्सो मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि आप एक टीम के अंदर यू आर अ लीडर, एक और टीम के अंदर यू आर अ पार्टिसिपेंट, एक और किसी टीम में यू आर अ मेंटोर, एक और किसी टीम में आप कोच हैं। सो लीडरशिप इज द एबिलिटी to look at a situation, see what is required from you, and be able to get into that role. So I look at this as, you know, people run for it, and then what is leadership? Leadership, अगर आप Google करें servant leadership के concept को, it's more about enabling others. So आप अपनी टीम के लिए क्या कर रहे हैं, आपने जो इम्पैक्ट क्रिएट करना है एक ब्रॉडर सोसाइटी में, उसके लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप उस चीज़ पे फोकस करेंगे और उसको बेहतर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें कि जी आपको रोल क्या मिल रहा है, टाइटल क्या है, आपकी अमेरिका में क्यों ज़रूरत है, व्हाई यू रिक्वायर्ड इन द यूएई, यू नो, व्हाई वुड समबडी वांट यू बैक होम आफ्टर यू गॉन ऑल अराउंड द ब्लॉक. You know, all of those become irrelevant because it's always been about creating an impact to the people that you work with, the impact to the organization that you work with, the impact to the society and your customers. Because अगर आप एक income statement देखते हैं किसी भी business की, सबसे पहला लाइन होता है revenue. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बॉटम लाइन से क्यों नहीं शुरू करते, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लोग कहते हैं, लेकिन यार द बिगेस्ट थिंग इज रेवेन्यू, बिकॉज रेवेन्यू कहाँ से आता है, आपके कस्टमर बेस से आता है. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, इफ यू आर नॉट एबल टू मीट देयर स्टेटेड एंड देयर अनस्टेटेड नीड्स, देन यू आर फॉलिंग बिहाइंड. द लास्ट थिंग इज कि आज जो चीज़ आपको कामयाबी दे रही है वो शायद 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको कामयाबी ना दे. दुनिया तो वैसे भी बदलती है, ये हमें पता है, लेकिन अब जिस तरह टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बदल रही है, वो दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको हाइपर स्केल पे लेके जा रही है. इट्स नॉट जस्ट एक्सेलरेट with AI, with other things reaching an inflection point, you know, we are going to see a huge shift, a huge shift in customer behavior, a huge shift in the demographics of what is required in an organization in terms of human skill sets to be able to manage this technology change. So जो आप, and yes, ये students के लिए podcast है, as I understand, मेरा आपको मशवरा ये होएगा कि आपके जो भी करिकुलम है आप उसके रट्टे ना लगाइए. नंबरों को भूल जाएंगे, 1 सेकंड में नंबर भी आ जाएंगे अगर आप चीज़ें सही करेंगे. बट ट्राई एंड थिंक ऑफ दिस एज एन एक्सरसाइज कि एक चीज़ है, मुझे इसके बारे में इस वक्त कुछ मालूम नहीं है, इसलिए वो नया कोर्स है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ. एंड ऑफ द कोर्स में आप ये एवेल्युएट ना करें कि मैंने क्या सीखा है, वो तो आपने सीख ही लिया, वो तो गिवन है, वो बेस लाइन है, उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए. मेन चीज़ ये है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंडिपेंडेंटली कितनी डेवलप हुई हैं कि कल को अगर मैंने एक और सब्जेक्ट देखना है तो मुझे क्लास की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उसको थोड़ा सा रिसर्च करके आई शुड बी एबल टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट, अंडरस्टैंड इनफ to be able to manage it and take it forward. Yeah, that makes sense. I mean, I love the idea of creating impact. I mean, personally speaking, and those especially of our alumni who are watching this, when you get into a leadership role, you tend to be a little bit transactional. तो ये जो आप कह रहे हैं servant leadership वाला concept, on theory, on paper, it looks really good, but in practice there's a conflict. How can we balance it? तो ये जो multiple किस्म की demands है, I have to perform, but then I have to make sure everybody is taken care of. There is an inherent conflict in it. How do you manage it? That's where leadership comes in. That's where your ability to influence without authority, right? So
अब कुछ चीजें हैं, for example, in an organization you will have a board that represents the interests of the shareholders or whatever stakeholders, if it's a non-for-profit. Now you can look at yourself as a leader to say, I'm an order taker. What the shareholders communicate through the board to me is what I go execute. मैं तो जहाज के पायलट की तरह हूँ, टैक्सी चलाने वाला हूँ. The other thing is, good progressive boards actually want management to come up, share with us your plan. We are about governance. We are about the broad strategy we're giving you. So, for example, for HBL, given that we're part of a foundation, one of the things is financial inclusion, right? So now that in that broad mandate, it is up to you to be able to advocate what you would exactly like to do. And then when it comes to rewards and remuneration, you have to have a fact-based discussion. One fact-based could be, okay, what is the market median, right? Most commonly occurring, range. And compared to the market, what has your people accomplished, which has been better? Second is, when we now come to the bottom line, right? If the ratios show that we've done better than planned, then some of it you need to advocate. So again, it will be up to you. I'm not saying that वो कहते हैं ना कि जी वो ईद का दिन नहीं है कि हर चीज आपको मिल जाएगी, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे 3-4 किस्म के लेंस लगा के एक प्रोपोजिशन को आगे करने के लिए, तो people will definitely take a look at it. Then you should always, have, progressive lens on. And by progressive lens, मैं actually example, पुराने वक्तों में हम बाइफोकल होती थी, बीच में लाइन होती थी, तो एक ही ऐनक में आप पढ़ भी सकते थे नीचे वाली साइड से और दूर भी देख सकते थे. The second thing that you have to worry about, like I said, things today may not be the same tomorrow. तो कुछ तो आपने फोकस रखना है on the short term, इस साल के ऊपर, कि what is it that we're going to deliver for our customer, and what does it mean for our shareholders and for the entity and our employees and all of that. So that could be one thing. But the second is, if there are changes coming in behaviors, in technology, and other things, what is banking going to look like 5 years from now in Pakistan? In the region, we are in 9 different locations as well. We're not just in Pakistan. So ये सारे का सारा आपको एनालाइज करना है और आपको फिर इसको आगे लेके चलना है कि मैंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स करनी है जो ओवर अ टाइम, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आपने ऐसे किया और वो टेक्नोलॉजी आ गई, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो आप चने खरीद लेंगे. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये मैंने देखा है इतने सालों में, 38 years मेरे हो गए हैं बैंकिंग के अंदर. कल्चर इज द बिगेस्ट थिंग टू चेंज. टेक्नोलॉजी आप खरीद सकते हैं, बंदे आप हायर कर सकते हैं, लेकिन यार कल्चर अगर चेंज नहीं होएगा, और कल्चर किस तरह बनता है कि आपका इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो है वो किस तरह सोचता है, आपका इंडिविजुअल एम्प्लॉय किस तरह सोचेगा, जो आपने आपकी स्टेटेड वैल्यूज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, अगर वैल्यूज़ नहीं है तो बना लें. अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं ग्रेजुएशन के बाद कि जहाँ पे वैल्यूज़ की कोई रिटन है ही नहीं, वो कहते हैं जी जनरल वैल्यूज़ हैं, ह्यूमनिस्टिक है, या तो आप लिख लेना 5-6 उसके ह्यूमनिस्टिक की क्या चीज़ें हैं, एंड एवरी एम्प्लॉय शुड नो देम. And when we start creating an impact, when we start doing servant leadership, it's about enabling people with, do we ourselves walk those values? जो आप बात कर रहे थे ना पहले कि जी is it transactional? It's not. People are watching you, every word that you say. आज ये पॉडकास्ट हो रही है, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये तो मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, मे बी द लास्ट टाइम, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे इन एन ऑर्गेनाइजेशन where you are the leader, everybody is looking at you. They're looking at your expressions and they're looking at your words and they're analyzing it. आपको ख्याल नहीं है. So if you are saying something and you're doing something different, then you're telling them, do as I say but don't do as I do. That is not the right message.
you have to, वो अंग्रेजी में एक चीज कहते हैं walk the Walk the talk. talk, exactly. So we have to walk the talk, and you have to walk the talk every day. That is the way you earn the trust of people and you're non-transactional. Amazing. लेकिन ये ख्याल रखें कि अगर आपने एक स्लिप अप किया, ट्रस्ट लूज करना एक इंसिडेंट से हो जाता है, रीगेन करने में 10 गुना मुश्किल होती है. सो all I'm saying is people who feel that this is a power role, कि जी somehow I am above other people because they all work for me. पहली बात तो ये है, hello, they don't work for you, they work for the organization. We all work for the organization. I am just an employee of HBL, just like any other employee. The only difference is the role and job responsibilities may be different. Every human being deserves respect. Even if it is a contractor staff looking at facilities, doing whatever, security, they all deserve respect. Makes sense. आप respect देंगे. जो मैंने पहली ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की अपने करियर में, तो उनके बैलेंस स्कोर कार्ड था एनुअल रिव्यू का, और उसमें एक कॉलम था जिसमें अंग्रेजी से हेडिंग थी जो मुझे पहली दफा समझ नहीं आई, इन्फ्लुएंसिंग विदाउट अथॉरिटी. That's a nice KPI. As a KPI for all employees. मैं अपने मैनेजर के पास गया, मैंने कहा ये क्या बला है. अगर मेरे पास दिस पर्सन डजंट रिपोर्ट टू मी, राइट, मेरी अथॉरिटी नहीं है, हाउ डू आई गो इन्फ्लुएंस देम. मैं कहा यही तो बात है. So again, leadership is also about not just that you are able to create impact in the people that actually work for you, but how do you create impact across the industry? Those people don't work for you. How do you have people coalesce on big challenges for, say, Pakistan's economy, where we collectively dialogue, come to a collective view of what we believe would be the right way forward, and advocate that to the relevant authorities that can make those changes. That requires work. That requires influencing without authority. So I'm glad I joined an organization. I was fortunate to join an organization जिसमें ये 20% weightage का KPI था. Amazing. So 2020, that was 100%, and across 5 KPIs. Awesome. हमारी आज की conference का theme is also around AI and technology. So before this conversation, I called my younger brother who happens to work at HBL, Adil Amir Mukhtiar. He works with Awais Malik and Abrar Mir and his team. He's on the techie side. Yeah, so I'm not the dinosaurs. Yeah, I asked him, is this digitization and technology is being taken seriously? And he said, yes, we are investing heavily in customer journey, usability. Now, I understand the tech side. From the perspective of the CEO, what does customer-centric banking actually means? I mean, for them, it's dashboards and apps. What is it for you? So for me, it is exactly what it is, that we have to put, अगर मैं बहुत आसान चीजें लफ्ज में बोलूं, customer, has to be at the center of everything we do. उसके गिर्द हमें काम करना है. चैलेंज ये आएगा कि जब हम मोर एंड मोर टेक की तरफ जाएंगे. आज की तारीख में अगर मैं अपना कस्टमर बेस देखता हूँ, तो मेरे पास रफली 4 डिफरेंट जनरेशन्स तो हैं ही हैं जो मेरे साथ बैंकिंग कर रही हैं, राइट, इफ नॉट मोर, राइट. हर एक का एक डिफरेंट प्रेफर्ड मोड ऑफ मैकेनिज्म है. आहिस्ता आहिस्ता लोग कलेस कर रहे हैं टेक की तरफ से, बट टेक इज नॉट द ओनली आंसर. इट्स रियली अबाउट कि जी वी हैव टू बी ड्रिवन बाय व्हाट द कस्टमर वांट्स. तो कुछ हमारे बुजुर्ग कस्टमर हैं, वो कहेंगे मैं चेक लिखना है, मैंने ब्रांच में आना. सही बात है. तो हमारे पास 1600 ब्रांचें हैं, हम कुछ ब्रांचें और भी ऐड कर रहे हैं. आप बोलेंगे जी तो डिजिटलाइजेशन हो रही है तो ब्रांचें ऐड करने की, बिकॉज देयर आर सर्टेन कस्टमर्स हु वांट इट. आज हमारा जो करेंसी इन सर्कुलेशन कैश है is 3 times the equivalent of any other comparable country, और अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज से करें उससे तो बहुत ही ज़्यादा है. So cash in Pakistan's economy realistically is a real need of people now.
डिजिटल पाकिस्तान की हम बात करेंगे, अभी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो आएगा इंशाल्लाह और उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसमें फिर कस्टमर सेंट्रिसिटी विल मीन डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज उसमें तो ब्रांच नहीं है, उसमें तो टेलर नहीं है, इंसान नहीं है, उसमें तो मशीन है. So how do we make the UI UX experience of a mobile app easier, intuitive? कुछ एप्लीकेशंस है अगर आप जाते हैं वो ऐसी आसान है कि आप मतलब 5 मिनट लगाते हैं आपको समझ आ जाती हैं. कुछ हैं कि आपको पूरी साइंस लगानी पड़ती है उसके पीछे. मुझे याद है एक कैलकुलेटर मेरे पास मुझे मिला था HP का 12C, मुझे अब भी याद है और अब मैंने उसका डिजिटल वर्जन रखा हुआ है अपने फ़ोन पे फॉर मेमोरी से. उसको मास्टर करने के लिए, बिकॉज इट वाज अ मिनी कंप्यूटर, you needed hours and hours of training. So from a UI UX perspective, it was geeky. Android phone, much more powerful than Apple. लेकिन जिसके पास 2 पैसे है वो Apple इसलिए लेगा कि वो simple है. It's intuitive, right? So but that's one example. The other thing is, you know, making the channel easy. मैं क्रेडिट कार्ड निकालता हूँ, बटुए से निकालना पड़ता है, वो बटुआ ही ना लेके भाग जाए, जो आजकल हालात का भी नहीं पता. अगर मैं सॉफ्ट कार्ड फोन के ऊपर कर देता हूँ तो टैप एंड पे मुझे सिर्फ फोन टैप करना है. NFC डिवाइस है तो मुझे सिर्फ गुजरना है, पे हो जाएगा. सो आई थिंक दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड इट. और जब मशीन काम ना करे देन यू नीड इंस्टेंट सर्विसिंग अवेलेबल either through an automated means or through humans. And that is how you become customer centric. और उसमें बहुत आसान है. आप अपने आप को एक आम सारिफ की तरह सोचें और सोचें कि आप क्या चाहते हैं, और 2-4 और लोगों से पूछें, 2-4 और सेगमेंट के, जेंडर्स के, जियोग्राफीज के, इनकम लेवल्स के, उम्रों के, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार आपका एग्रीगेट कस्टमर क्या चाह रहे हैं. सही बात. उसके हिसाब से आप काम करें. तो कोई भी चीज़ इस दुनिया में अगर आप कंसेप्चुअली ग्रास्प कर लेते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है. उसके बाद उसमें जितनी आपने कम्प्लेक्सिटी डालनी है आप डालें. बट दिस इज व्हाट माय रिक्वेस्ट इज कि प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू डू फर्स्ट एंड देन गो डीप इनटू इट टू व्हाटएवर लेवल इज रिक्वायर्ड. बट अगर आपको you don't have the right starting point, you're never going to get to the finish line. Amazing. You'll be lost. Yeah, amazing. I've just been signaled we are left with 5 minutes, so let's just go to the fun part, which a lot of our audience loved. I thought this was fun. We call it the rapid fire. Oh Jesus! So first word I don't have a vest. Don't worry about it. You don't need it. So what comes to your mind when you hear the word leadership? Impact. Risk. Optimize, not eliminate. You just have to apply. Failure. Failure is a learning opportunity. There's nothing as failure. It's a learning opportunity. Trust. Growth mindset versus fixed mindset. Trust. I told you, trust is very precious. Yeah. Work-life balance. What's that? Banking. Let me elaborate. Yeah, that'll be fun. Yeah. Yeah. I mean, I don't believe in work-life balance. I believe in the quality of work and the quality of how you spend your rest of your life. And secondly, we're connected 24/7. I see you got 2 phones. Yeah. You're doubly connected. Definitely connected. So I think the concept is outdated. What we need to do is that in our life, which includes work and life, you know, how do we find the right comfort and relaxing? I mean, I find being in my office the most therapeutic. Amazing. That's my relaxation, is I'm working. And that's the other thing I'll say, and this does not become rapid fire, it becomes very slow now. You know, that if you do something that you love, it's not work anymore. Yeah. It's a passion. It's passion. So you have to bring passion to the work, then this thing goes away. That's why I said, what work-life balance. Amazing piece of advice. Thank you for sharing your not just journey, but your perspective on leadership, responsibility. Thank you, Nassir, for taking time out. Lovely. It was lovely. It was a great one. And thank you. I hope इससे कुछ थोड़ा बहुत आप लेके जाएं. Thank you very much. Thank you for listening in. Stay tuned. We'll have more episodes coming forward. Looking forward to the next episode. Ciao, ciao. Thank you.